Good evening, Assalamu alaikum, everyone. This is Sandhi Sanwar, your host for the day. We have a very special webinar lined for you today. Our webinar is going to be about the anchoring art and involving all the tips and techniques in it. We will be talking about all the important factors that we need in order to, talk about a very well hosted show. Our guest for the day is none other than Omar Khan. Umar Khan has had 11 years in the radio broadcasting experience. He has also done over 4,000 live shows. He is an actor, he is a writer, he's a voiceover artist, he's a public speaker. He has been right now working with FM 105. Previously, he was working with Must FM 103. He has hosted also live shows in Radio Mirchi, that is across border in India, for the 2019 World Cup. He is a proud Greenwich alumnus and my mentor as well. I welcome Umar Khan. Thank you. Hi, Thank you. Umar. How are you? This is a very big thing, to actually have you over there and me actually hosting. It's a very big honor. So, Umar, tell me, how is Umar Khan? I'm absolutely fine, and I'm very proud right now because few weeks ago there was Sundar Sanwar in the comments, and now hosting me. So it's a very proud moment for me. Oh, that's so sweet. That the honor is all mine, sir. So, Umar, tell us about it. This webinar, what is the importance and why this topic? Why to talk about anchoring art tips and techniques? Well, it's very important because during this lockdown situation, we've seen that everyone is doing webinars and doing these digital programs, they're hosting shows. So it's very important for us as an educational platform to tell people Yes, how to do it, to guide them to the right path. Now, doing live shows is not easy. You know, you need a certain techniques, a certain protocols that you have to follow. And during this time, we've seen that everyone has shifted towards it. Doing seminars at a person presenting, it's different. But when you're yes. facing the screen, when you're facing the mic, things are different. So there's slight guidance that people need, and that's the whole basic idea of this webinar today, where people who are already doing shows, so we're just trying to give them that guidelines to how they can improve their live presenting skills. So, Umar, starting off with how do you look at the future now after you've seen that there's a big change in the media industry? You can see that people are coming online, people host live shows, either people become bloggers. So, what is your point of view now? Okay, how do you see it? Well, I'm a very positive person. I always look at the bright side. So Yes, we all know. the world has become closer. The world has become much more global. So guests and people that were not very approachable in the past are very approachable now. You can Yeah, do cross-border programs with anyone around the globe from any country. So that, yeah. as an educational platform, I would say, has widened the horizons. That you get so much exposure. You know, you get so much intellectual people. So that is one positive point. But the thing that hurts me a lot is that we see many people doing programs, but they're way away from the basics. Even if I talk about our mainstream media, Mm. where we overall, on a wider perspective, are away from the basic ethics and basic rules that we need to check while doing programs. So, as an educational platform, it is our responsibility to remind all the people who are on screen that how they should be doing a program and what protocols they need to follow. That's so true. I would agree to that. I've seen a lot of people coming, but yes, there are certain techniques and mentoring needed. I was mentored by you, and you always tell me that do your homework, make sure you're doing everything 1 day prior, 2 day prior, so you have everything aligned. If there's something that's going on wrong, you try to make comebacks for it. So much start. How this tarah, you started mentoring me. So what is the first step? How do we go? Okay. I tell all the steps, but the basic reason for this webinar is for the people. So I would encourage our audience to ask questions if they Hmm. have any confusions regarding doing live shows or hosting. So you can Yes. just comment, and I'll be more than happy to answer those questions as well. Now, coming back to your question, it's very easy because it took you only 2 days, mashallah,
to get trained in hosting your very own programs, and that is such a proud moment for me as well. Now, Right. I'll talk about you because since you're a live example for everyone today. So what happened when Sundus approached me and she told me that I'm willing to do programs? So the first and basic thing was there, the intent. So she had that intent that I want to do programs. So the first thing that you need is you need that passion, you need that intent. You already had it. Now, what was required was the basic guideline, right? And let me tell everyone, mashallah, she's such a quick learner that सुंदस को एक बार कोई चीज बता दो दूसरी बार बताने की जरूरत नहीं पड़ती. सो ये इनका अपना हार्डवर्क है. और जितने लोग जो प्रोग्राम्स करना चाहते हैं, इट्स नॉट जस्ट फॉर स्टूडेंट्स. हाँ, इस टाइम पीरियड के अंदर हमने देखा है, जब से हम लॉकडाउन सिचुएशन में आए, कोविड में आए, टीचर्स, प्रोफेशनल्स जो कि अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, बट टू दी अडेप्टेशन ऑन स्क्रीन आके अपने लेक्चर्स डिलीवर करना, ऑन स्क्रीन आके प्रोग्राम होस्ट करना, इट इज अ होल डिफरेंट एक्सपर्टीज. तो वी हैव सीन कि अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स भी ऑन स्क्रीन आके स्ट्रगल करते हैं. And this is the reason why we're having this webinar, this live session, कि हम लोगों के वो बेसिक जो कंफ्यूजन्स होते हैं उसको क्लियर कर सके और उसकी गाइडलाइन दे सके. सो पहली चीज होती है इंटेंट, ये उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं. एट द सेम टाइम वी विल आल्सो बी टॉकिंग अबाउट द प्रोफेशनल्स हु आर स्ट्रगलिंग doing live programs on these digital platforms. So coming back to the students, तो इंटेंट आपके पास मौजूद है. द सेकंड थिंग दैट यू नीड इज कॉन्फिडेंस. ये भूल जाएं कि आपके उस तरफ जो लोग मौजूद हैं वो आपके बारे में क्या सोचेंगे. आर यू राइट और आर यू रॉन्ग? बिकॉज आप जब अपनी मेहनत करेंगे, जैसे आपने बोला कि मैं कहता हूँ आप अपना होमवर्क करो, अपनी वर्किंग करो, so when you have believe in yourself, आपने अपनी वर्किंग की हुई है, you know your topic very well, you know your guest very well, तो फिर there is no margin of errors, right? तो उसके लिए आपकी मेहनत जरूरी होती है ना. I've been doing radio for 11 years and during my early years मेरे साथ के एक हमारे मौजूद थे शोएब अहमद. शोएब इन कंट्रोल के नाम से वो मशहूर थे. So no, that was his name for the radio. Sunset show उनका होता था. Shoaib in control. Yeah, Shoaib in Control was his show. So उनका मैं यहाँ कोट इसलिए कर रहा हूँ कि in my early days I started off when I was 17 in the radio field. So जब मैंने देखा कि 2 घंटे के शो के लिए that guy used to prepare for 8 hours, right? और वो 2 घंटे का शो जब वो डिलीवर करते थे, there was like this bunch of papers all over in the radio room and that was his working for that 2-hour program. तो जब उस 2 घंटे के प्रोग्राम के लिए 8 घंटे की मेहनत होती है, तो जो क्वालिटी और कैलिबर होता है आपके कंटेंट का, वो नजर आता है. नाउ व्हाट द आयरनी इज दैट व्हाट वी सी ऑन आवर मीडिया दीज डेज एंड वी हैव सीन कि हमारे जो एंकर्स की और हमारी सेलिब्रिटीज की, अब जो सेलिब्रिटीज हैं कमिंग बैक फ्रॉम द ओल्ड एरा, हमारे पास लेजेंड्स होते थे, मोइन अख्तर, उमर शरीफ, अनवर मकसूद आज भी हैं हमारे साथ. अब हमारे सैडली जिनकी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड में फॉलोअरशिप मौजूद है, आई डोंट इवन वांट टू मेंशन द नेम्स, बट द कैलिबर एंड क्वालिटी ऑफ कंटेंट हैज ड्रॉप्ड वेरी ड्रास्टिकली. रीजन ये नहीं है कि जो है कि please don't mention the names, Umer, please don't mention. I don't want to, it's बड़ा obvious है. देखिए, I'm not a hater, but what I say कि whatever you're doing on national media, whatever is reaching far and wide, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपकी ऑडियंस को कुछ प्रोडक्टिव मिले, आपके ऑडियंस उससे सीखें, आपके ऑडियंस को पॉजिटिविटी मिले. नाउ मेरे साथ ऑडियंस आज मौजूद है, कितने लोग आप एग्री करें या डिसएग्री करें, व्हाट हैपेंस कि आप कभी भी अपना मीडिया ऑन करें and all you get is negativity, all you get is increase in frustration, all you get is hate speech. So these are not the basics ethics of doing live program. मैं अगर फॉर एग्जाम्पल ऑन स्क्रीन आ रहा हूँ और मुझे कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं, चंद एक भी फॉलो कर रहे हैं, तो इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उनको अवेयर करूँ, मैं उनको एजुकेट करूँ, और जो इन्फॉर्मेशन मैं उनको दे रहा हूँ वो 100% ऑथेंटिक हो. As a host, as an anchor, as a media person, if you're giving some information to the other person और वो questionable है या वो सिर्फ मेरे ओपिनियन के ऊपर बेस्ड है, so what I'm doing is I'm misguiding those people. कितने लोग होते हैं जो रेडियो पे और टीवी पे बात सुनते हैं और
बिल्कुल फैलाना शुरू कर देते हैं। यार ये बात मैंने रेडियो पे सुनी, ये बात मैंने टीवी पे सुनी, अब That's उस बात में कितनी ऑथेंटिसिटी है, राइट? तो oh yeah. जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले। नाउ व्हाट हैपेंस, द आयरनी इज, अगर कोई भी इंसान टीवी पे आ रहा है, यूट्यूब पे आ रहा है, इंस्टाग्राम पे आ रहा है, फेसबुक पे आ रहा है, एंड यू हैव अ सर्टेन फॉलोअरशिप, so people start thinking of themselves as celebrities. They start thinking themselves as we have the power. No, you're Oh no, responsible. You're you're responsible. responsible. You're highly responsible for every single thing. अब इस कोरोना की एक एग्जांपल ले लें। इस कोरोना के टाइम Hmm. पीरियड में जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाइक्स एंड व्यूज व्हाट पीपल हैव डन, वो बिल्कुल अनएथिकल है। टोटके बता रहे हैं, चीजें बता रहे हैं, जो जिन लोगों ने 20-25 साल एमबीबीएस की डिग्री लगा के हासिल किए, द रियल हीरोज, द डॉक्टर्स आउट देयर हु हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स टू सेव पीपल, वो लोग बेवकूफ हैं। एंड दीज पीपल सिटिंग एट होम नोज बेटर हाउ टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम कोरोना। तो ये मिस इंफॉर्मेशन जो दे रहे हैं, दिस इज द मिस यूज ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स। तो So true. बेसिक एथिक्स जानना बहुत जरूरी है। और ये अवेयरनेस के लिए आज हमारा सेशन है कि देखें, आप Yes. अगर किसी भी प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं और लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, तो देयर आर Hmm. सर्टेन थिंग्स दैट यू नीड टू फॉलो। सबसे पहले आपकी ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी क्वेश्चन होती है। पॉइंट इज दिस, आपको एंकरिंग के अंदर जो बेसिक चीजें हम उस पर भी बात करेंगे, दैट हमने बात की कि इंटेंट होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बट उससे पहले जो आपका माइंड सेट है और जो Hmm. आपका विजन और अप्रोच है बिफोर कमिंग ऑन द कैमरा, दैट इज वेरी क्रूशियल। बिकॉज आपका जो पर्सनालिटी है, आपका जो विजन है, आपकी जो अप्रोच है, वही मेंटालिटी अप्रोच आपके व्यूअर्स में ट्रांसफर होगी। So what we see Oh. that people who are getting that negativity and that frustration from our mainstream media is because the people sitting on this side of the camera is spreading that frustration and negativity. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल कि आपका जो भी एंकर पर्सन है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना काम बिल्कुल विद फुल हार्ट करे। द पर्सन हु इज बिहाइंड द कैमरा डजंट मैटर, मेरा क्या ओपिनियन है डजंट मैटर। जो बेसिक एथिक्स हैं वो ये True. है कि मेरी इंफॉर्मेशन कितनी करेक्ट है, मेरी इंफॉर्मेशन कितनी वेरीफाइड है, और मेरी इंफॉर्मेशन जब मैं लोगों को पास ऑन कर रहा हूँ तो उससे उनको क्या बेनिफिट मिल रहा है, right? So Mhm. these That's are true. the That's true. so these I are the agree basic to that. these are the basic things that we have to come up with. And now अगर आपके पास कोई comments हैं तो बिल्कुल उनको शामिल करते हैं। हाँ हाँ um, बिल्कुल I would get in my comments as well now and तो उमर I totally agree to your point मुझे तो सबसे पहले उमर आप में ये बहुत एक down to earth humbleness दिखी थी कि when I when we were talking and whenever you are informing me you are always very calm and you're patient and you listen you don't have that in you जो एक होता है ना एक इंसान में you have hosted 4,000 live shows that's a big thing so anybody else would say that Umar is a big deal, but mashallah, and but Umar doesn't show it. Umar is never like that. When you see Umar, Umar is like, idhar aao, it's okay, all's good, sab chal jao, no, everything's fine. So, how do you build this? How do you build this, stability in your personality? देखिए, सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है, जो मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी जितने मीडिया फेटर्निटी के मेरे कोलीग्स हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी हैं, देखिए, वी हैव टू बी हम्बल। ये जो एक मीडिया माफिया हमने क्रिएट की हुई है, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, दैट इज एब्सोल्युटली अनएथिकल। वी आर डूइंग अनजस्टिस टू द इनोसेंट पीपल आउट देयर हु ट्रस्ट अस ब्लाइंडली। जहां तक आपने हम्बल होने की बात की, द पॉइंट इज, एक चीज मैं अपने पे अप्लाई करता हूँ और मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ अप्लाई करने के लिए, दैट आई एम नथिंग। द डे That's true. मैंने अपने जहन में ये चीज बिठा ली कि आई एम समथिंग या आई हैव द पावर टू डू एनीथिंग, दैट इज द स्टार्ट ऑफ माई डाउनफॉल। ये इंसान का एक That's a गुमान है, ये इंसान का एक गुमान है कि वो कुछ कर सकता है। A human being is so helpless that he can't do anything, और ये कोरोना ने सबको प्रूव किया। The all people with maximum power, maximum influence, everything, they cannot do anything to prevent corona or death. So I don't true. understand why people with a bit of fame, a bit of power, a bit of influence, they start thinking something of themselves.
तो एक चीज मैं सबको बोलता हूँ, बी हम्बल। और जो आपकी अचीवमेंट हो चुकी है वो पास्ट में हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई डू अ वेरी सक्सेसफुल शो और आई अचीव समथिंग वेरी बिग, आई गेट एन अवार्ड टुडे, ठीक है, next time when I appear, I cannot brag on the thing that I have done yesterday. I live in that moment कि उस moment मैंने क्या किया, so that I can improve myself. The day मैं अपनी सक्सेस को, या कोई भी इंसान अपनी सक्सेस को अपने सर पे चढ़ा ले, वो ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि वो उस चीज के ऑरा के अंदर से बाहर ही नहीं निकल सकता। तो ये मेरा Yes. माइंडसेट है, मेरी मेंटालिटी है। और जितने आप दुनिया के बड़े बड़े सक्सेस देख लें, जिन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट किया, एक्टिंग की अगर बात करें, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात कर लें, आमिर खान की बात कर लें, तो दीज आर द गाइज जो अपने काम पे इतना एफर्ट पुट इन करते हैं, वो अपने कैरेक्टर में डूब जाते हैं, एंड ऑल दैट स्टफ, दैट इज प्रोफेशनलिज्म. So what we lack today is professionalism, honesty with your job that you're doing. So this is something that we need to do. कि अगर कोई anchor है, host है, it is not that easy कि मैं आया और मैंने script read out किया and it's done. If I need to connect with the people, if I need to reach the hearts of the people, I have to go that extra mile and get into the heads of people, what they want to hear. एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी और डिजिटल पे भी होता है कि जी ये चीज चलती है, ये चीज जल्दी वायरल होती है, सो वी टेक द शॉर्टकट्स ऑफ पोर्ट्रोइंग नेगेटिविटी, of portraying vulgarity, of portraying the conspiracies and all the gossips. So what we're doing, just for the sake of likes, we're not being productive. हम अपने That's true. ओरिजिनल हम अपने ओरिजिनल एसेंस से दूर जा रहे हैं, एंड देन दैट्स व्हाट पीपल वांट। ये एक सबसे गलत बात है। हमारे पास पास्ट में, हिस्ट्री में, पाकिस्तानी कंटेंट पे इतना अच्छा काम हुआ है और उसकी फॉलोअरशिप थी। तो आप शॉर्टकट की बेस पे अगर ये कहें कि जी अच्छा काम हम करेंगे नहीं, लोग पसंद नहीं करते, आप लोगों को अच्छे काम की आदत तो डालें। आपने Oh, oh, big words, big words. आपने लोगों को सिर्फ नेगेटिविटी की आदत डाल दी है। आप कोई अच्छा काम करेंगे वो उनके सर के ऊपर से जाता है। तो बीइंग एन बिल्कुल. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोगों को एजुकेट करें। और हमारा क्योंकि मीडिया डिपार्टमेंट भी है, मीडिया स्टडीज भी है, हम आज के लोगों को वो एजुकेशन दें जो करेंटली हमारी मीडिया फील्ड में लैक करती है। Umar, taking your point forward, 100%, we all agree loyalty is the biggest thing that is missing out, and people are very getting dishonest. Umar, talk about the equipments and everything. That what is it about? How are we going to go with it? Because अभी आपने बात करी अपनी full setup की, तो वो क्या हुआ, उसको किस तरह setup करा, उसके पीछे क्या क्या होता है? देखिए, अभी जब हम कोरोना की फेज की बात करें, तो कोरोना का फेज ऐसा था कि इट वाज अ बिग चैलेंज, नोबडी वाज प्रिपेयर्ड। अब इसके अंदर व्हेन यू टॉक अबाउट प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन इज इम्पॉसिबल विदाउट अ टीम। यू नीड अ पर्सन ऑन द कैमरा, यू नीड अ पर्सन ऑन द लाइट्स, अ पर्सन ऑफ कोर्स हेयर, साथ में मेरे 4 लोग होंगे, तो इट इज इम्पॉसिबल। और हमने देखा हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे जिन लोगों को कोरोना हुआ, तो पूरी टीम को एक साथ हुआ। तो सबसे Yes. बड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए प्रोडक्शन कैसे करें, तो उसमें वी टुक हेल्प ऑफ डिजिटल सॉफ्टवेयर्स। देयर वर सॉफ्टवेयर्स लाइक StreamYard, Zoom, Microsoft Team, and there are many more, Instagram Mm. Live, Facebook Live। तो हमने इन सॉफ्टवेयर्स की हेल्प के साथ सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए, अभी भी देखें, आप अपने घर पे हैं, मैं अपने घर पे हूँ, हमारा कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, एंड वी आर डूइंग अ Mm. प्रोग्राम, वी आर रीचिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। So Yes. at quality of content and the quality of our everything, the sound, the video is Mm. very decent. तो दैट्स हाउ वी स्विच्ड ऑन टू इट। और मेन देखें, चाहे आपकी जो इक्विपमेंट की क्वालिटी है उस पर आप कॉम्प्रोमाइज कर भी सकते हैं, बट आई बिलीव द क्वालिटी ऑफ योर कंटेंट, इन सेंस कि आप शो में बोल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस Right. बात मैंने प्रीवियसली की, शॉर्टकट का सहारा लेना, नेगेटिविटी पोर्ट्रे करना, वल्गैरिटी पोर्ट्रे करना, गॉसिप्स, मसालेदार चीजें पोर्ट्रे करना, एंड गेट cheap publicity for likes and viewership. What you're doing is, for the timing, you're getting likes, you're getting followership, but आप अपनी पूरी generation को at the same time बर्बाद कर रहे हैं। What So we've true. seen, the most viral thing right now, and every other teenager is a celebrity through an app. I don't even want to name the app to give it free promotion. वहां पे हो क्या रहा है?
हमारे अच्छे खासे नॉर्मल लड़के जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाइक्स वो आपकी तरह सर पे स्कार्फ लेके मेकअप करके वीडियोस बना रहे हैं. So is this our future generation? So we need to educate people कि यार आप अच्छा at the same time from the same application we are seeing people using it in a very positive way and doing very Hmm. positive content. So there are always two choices. Either you take the hard way where you're being positive, constructive, and you will earn the respect in that hard way. Or you take the shortcut doing the negative, gossip, vulgarity things. You will get fame overnight, but you will never get the respect. The comments, the thing that you get is mostly 90% उनको negative comments और abusive language मिल रही होती है. So, do Hmm. you want to trade respect for your likes? So, it's the mentality that we need to change. That's true. That's so true, Umar. I'm actually very, shocked at the same time. You have highlighted a very big topic that content matters. And I've always followed people online or, on the bloggers that I follow. I make sure that they're, educating, or even if they're not educating, they're just being positive. They're happy about life. They're showing you the good part of life. And, that's how even I got attracted to your live shows that, when you used to say that Pakistan's Zindabad, it's a huge thing to commend your country is a huge thing. I believe that somehow we've lost it. We've lost the love for the country. I'll share something very personal here. मेरा क्योंकि international guest के साथ shows होते रहते हैं, and even when I travel, so I am representing Pakistan. तो पाकिस्तान की जो representation हमारे international media के through होती है, that is very negative. So there are very less positive things that happen regarding Pakistan. So I grab onto any opportunity to show the real side, the positive side, the educated side, the intellect side of Pakistan to people. And believe me, they're so surprised because they have this image that Pakistan is a very unsafe place and everything. But whenever Mm. I interact with foreign people and I'm representing Pakistan, so I show the positive side. So they are so amazed and उनको उनके लिए एक बड़ा ये नई बात होती है. And through that वो अपने पूरे सर्कल के अंदर बात करते हैं कि no, what we see in the media, that's not Pakistan. पाकिस्तान में last years के अंदर tourism इतना बड़ा and every single person who visited Pakistan portrayed that image. So I don't understand the influential people of Pakistan, the media people of Pakistan. They go abroad outside Pakistan and they portray Pakistan as negative. कि हमारे वहाँ तो ये नहीं है, हमारे पास तो वो नहीं है. Why? You live in the country and you're portraying the negative image. I think that's the most worst thing. Sundus, we have to include some comments. So आपके पास Okay. live comments का option आ रहा होगा आपके screen पे. If you can click on that and include the live comments. Okay, sir. Okay, I'll do that. देखिए मैं आज इस सेशन में हूँ और फिर भी मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ at the same time. Sir, जी, मेरे मुंह से भी ना sir, I'm like, okay, sir, I don't know. Uh, uh, yeah. शुरू से जो questions अगर हमें आ रहे हैं या चीजें आ रही हैं तो we can include that. Okay, we have lost Sundar. So, all right, I'll include the comments and I'll be talking on the questions. If you have any questions regarding live programming या anchoring के हवाले से अगर आपके जहन में कोई सवालात हैं तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं. I'll be more than happy बिल्कुल. to answer. जी सुंदर. सर मैंने वो कुछ कराओ कुछ से कुछ हो गया. सर अभी देखिए आएंगे. आई थिंक हमारे कमेंट्स आएंगे अभी. जस्ट I've fixed it out. I fixed it out. I tried. So sir, you've always said, Umar, you've always said that so just bring the guest back on the topic. Try to bring the guest back on the topic. How do we do it? Like sometimes it's like when we're having a conversation, we just go in the flow and we lose the track. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे वहाँ बहुत से लोग हैं, they don't get the opportunity to speak, so they have lots of things to say. Now सबसे important ये होता है कि अपनी बात को concise way में बहुत ही effective way में portray कैसे करना है, post कैसे करना है, right? तो वो भी एक आर्ट है एंड फॉर दैट यू हैव टू वर्क ऑन इट. आप अपनी स्पीच पे वर्क करते हैं, आप अपनी डिलीवरेंस पे वर्क करते हैं, फिर द टोन ऑफ योर वॉइस दैट मैटर्स अ लॉट कि आपकी टोन क्या कैसी है. कि अगर आप सैड हैं तो आपकी टोन डाउन होनी चाहिए. इफ यू आर एक्साइटेड योर वॉइस शुड हैव एक्साइटमेंट.
Now, I've been doing radio for 11 years. When you're doing radio, you don't have visual view of yourself to the audience. तो आपकी आवाज का एक्सप्रेशन अगले को बता रहा होता है कि Mm. क्या मैं खुश हूँ या क्या मैं उदास हूँ. हम मैं अपनी Uh, वीडियो बंद करके भी. that's it. That's so true. That's so true. Umar, abhi jesse, for example, one of our commenters, Aisha Adil, is saying that the hardest thing is how to place our cell phones to look good. So she's like, help us in that. देखिए, बहुत ज़रूरी, वेरी गुड क्वेश्चन. बहुत ज़रूरी है कि आप एंगल्स को समझें. ठीक है, अभी Hmm. ग्रेनिच के अंदर समर प्रोग्राम के अंदर कोर्स भी ऑफर हो रहा है मोबाइल फोटोग्राफी. उसके अंदर यही चीज़ Hmm. सिखाई जाएगी कि एंगल कैसा है. फॉर एग्जांपल, आप कभी नोटिस करें कि आप फ्रंट कैमरा अपना अगर खोलेंगे तो आपका मुंह हमेशा बड़ा नजर आएगा. डायमेंशन नेचुरल है. यही अगर आप बैक कैमरे से पिक्चर खींचेंगे तो आप इतने ह्यूज नजर नहीं आएंगे. सही है. Hmm. वजह है एंगल्स मैटर अलॉट. हाइट, साइड्स, लाइटनिंग, एवरीथिंग हैज एन इम्पैक्ट. बहुत सी दफा हमने देखा किसी लोगों का राइट साइड बहुत प्यारी आती है, लेफ्ट साइड अजीब सी. Hmm. People have sides. People have sides. Yeah. ऊपर से देखते हैं, हम ऊपर से देखते हैं तो ऊपर से पिक्चर अलग आती है, सामने से अलग आती है, नीचे के एंगल से अलग आती है. तो ये सारे एंगल्स हैं. दिस ऑल इज साइंस. तो आप अगर समर प्रोग्राम के अंदर मोबाइल फोटोग्राफी का कोर्स अगर अवेल करते हैं, जो कि अभी भी आप कर सकते हैं, तो आई थिंक you'll get very valuable things on that in that course, जहाँ इसमें आपको पूरी प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा कि एंगल्स क्या होते हैं, लाइटनिंग्स क्या होती हैं, चीज़ें क्या होती हैं. So if we can Hmm. add, यहाँ में question add करते हैं on the screen. We have a question on the screen. Anila Weldon says, Umar, what's the most challenging thing you face when interviewing people live? What app do you suggest for multiple participants on Facebook? Right. So the app that I use for live sessions is StreamYard. It can host up to 6 people at the same time on the screen. The biggest challenge is to control people at the same time. देखें, लाइव शो है, कुछ भी हो सकता है. लाइव शो में कोई बदतमीजी कर सकता है, किसी को गुस्सा आ सकता है, Hmm. इंटरनेट कनेक्शन ड्रॉप हो सकता है, कोई नाराज होकर जा सकता है, कुछ भी हो सकता है. सो बीइंग अ गुड होस्ट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू इम्प्रोवाइज इन योर शो. कि अगर Hmm. आप, क्योंकि हम ये लर्निंग पर्सपेक्टिव से शो कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आज इस वक्त हमारे लाइव शो में कोई गलती हो जाती है, राइट? Hmm. फर्स्ट थिंग आई नीड टू डू, आई नीड टू कवर अप दैट मिस्टेक इन सच अ वे कि मेरी ऑडियंस को लगे कि वो गलती नहीं है, वो पार्ट ऑफ माई शो है. फॉर Hmm. एग्जाम्पल, आई यूज ह्यूमर. आप बहुत सारी चीजें इसमें यूज कर सकते हैं. आप ह्यूमर यूज कर सकते हैं, आप सार्केज्म यूज कर सकते हैं. यू कैन पिक अप ऑन योर ओन सेल्फ, या फिर आप उस चीज के ऊपर कॉम्प्लीमेंट करके, या यू कैन बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट कि भाई लाइव शो है, ये मेरे साथ हो गया, बेयर विद इट. तो दीज आर थिंग्स. तो पॉइंट ये है कि एक बड़ी फेमस लाइन है हमेशा से, एंड दैट लाइन इज द शो मस्ट गो ऑन, राइट? Oh, yeah. तो आपको नो मैटर व्हाट हैपेंस यू कैन नॉट स्टॉप. आपको चलते रहना है. लाइव शो का सबसे बड़ा आर्ट यही है कि यू नो हाउ टू इम्प्रोवाइज. That's so आपने true. रुकना नहीं है. नाउ टॉकिंग अबाउट द टॉपिक, टॉकिंग अबाउट योर गेस्ट, द बेसिक थिंग्स जो मैं आपको होमवर्क की बात करता हूँ, आपको टॉपिक से रिलेटेड चारों तरफ से सवाल के जवाब आने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ आवर टॉपिक टुडे इज टेक्निक्स एंड लाइव शोज, तो इससे रिलेटेड एक कॉमन मैन के जहन में जितने सवालात आते हैं, उन सारे सवालात के लिए मुझे अपने तौर से प्रिपेयर करना चाहिए कि ये क्या Hmm. होते हैं, कैसे होते हैं, आप को इसमें इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या टिप्स होती हैं, क्या टूल्स होते हैं, ऑल द बेसिक Hmm. क्वेश्चंस. Definitely, definitely, 100%. So as a host, what you need is you need full command over your topic. And then Hmm. if you are having guests, so you need to know your guest very well. उनका past, उनकी history, उनकी current scenario, उनका mode, वो किस nature के हैं. So that is when you can have a very good chemistry on screen, and you can carry on the show very well. Now, जो सबसे basic mistake लोग करते हैं during a live show is they do what they want. Okay, the show is always and should always be oriented for your audience. कि audience क्या देखना चाहती है, क्या सुनना चाहती है.
ये मैं उस सेंस में नहीं कह रहा जो नेगेटिविटी हम लोग कर रहे हैं कि जी ऑडियंस हमारी वल्गैरिटी गॉसिप देखना चाहती है तो हम गॉसिप वल्गैरिटी करें, नो। नहीं 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 नहीं। सेम टाइम यू कैन बी पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव। That's लोगों को true. एजुकेट करने के लिए लोगों का बेनिफिट किस चीज में। नाउ इफ आई स्टार्ट शेयरिंग माय स्टोरीज, nobody is interested. But if I share my stories or my guests inspirational stories in such a way जिससे मेरी ऑडियंस कनेक्ट करके सीख सके या ऑडियंस की जिंदगी के अंदर एक एड ऑन हो सके, so that is where they will get interested, right? So the program should never be me oriented. It should always Yeah, be you oriented. So that is one basic thing that I Umar, would. one of the great comments we have on our faculty as well, Miss Nadia Kaleem, she says that, first of all, Miss Nadia, hello. Good to see that you're watching. And what is the significance of interplay between content and time? Sometimes a lot of content to talk within short span. Sometimes uncertain things happen. So what about that? How would you take that? Okay, that is part of live shows. Uncertainty is Hmm. part of live shows. You cannot deny that. But अगर हो गया है तो क्या? You can't stop in the middle. So as I said before, improvisation is very important. इस चीज को avoid करने के लिए before the show you can prepare. Before the show you can talk to your guests. You can अगर एक combined show है तो सब एक discussion कर सकते हैं. एक basic guidelines हो सकती हैं. So everyone is clear. But then again when you are live, बहुत सी चीजें होती हैं। आपके साथ कितनी दफा हुआ होगा कि लाइव शो खत्म करने के बाद आपके जहन में आया होगा कि मैं ये भी बोल सकती थी, मैं ये भी कर सकती थी, हाँ, मैं राइट? हमेशा उम्र को बाद में ही बोल रही होती हूँ, उम्र में फिर भूल गई। So that is natural. But what you can do is you can always improve yourself for the next time, right? So True, उसके true. लिए आपका होमवर्क, कमिंग बैक टू द बेसिक्स, आपका होमवर्क कितना इंपॉर्टेंट है, आपकी बेसिक्स कितनी इंपॉर्टेंट है। पैनिक नहीं करना है। यू हैव टू स्टे काम एंड कंपोज। यू नो इफ अगर किसी चीज पे आपका कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर स्ट्रेस लेके कोई फायदा नहीं। मुझसे लाइव शो में कितनी गलतियां हुई हैं, कितनी बड़ी बड़ी गलतियां हुई, बट मैं उसके प्रेशर में आके फ्यूचर में वो गलती अगर रिपीट करूं, वो मेरी गलती होगी। पहली दफा गलती माफ है, दूसरी दफा गलती अगर मैं जानते हुए करूं तो वो फिर गलती नहीं है, दैट इज अ फेलियर। That's a failure. That's a failure. 100% I agree, and I always take your feedback very seriously because you एक तो होता है you always support, and then there's this part of you that very critically analyzes us, and I really like that. I remember you always giving me feedback शुरू में मेरे जितने shows होते थे, and it helped me so much. A mentor, I don't think anyone can do live shows to be honest. मुझे लगता है कि हर किसी को मेंटोर की जरूरत होती है, स्पेशली जब मैं अगर अपनी क्लास में होती थी, माय टीचर्स यूज्ड टू से सुंदर यू हैव सच गुड कॉन्फिडेंस, गो अहेड, एक्सप्लोर योरसेल्फ, एंड आई वुड बी लाइक नो, I need somebody to teach me everything, and you should be always ready for a teacher. So what do you say the people who just go and then afterwards you see them doing certain mistakes, so what अच्छा, happens? I'll tell you something. मेरा ये था कि growing up and through my teenage and all my life, so I always picked up the hard paths, and Hmm. mostly I did not had guidance at most points, but I would thank the Almighty in a very humble way that He was always there to guide me. Why do we look up to Oh. humans? We have the supreme power. So I had that guidance that kept me on the right path and always kept me focused away from the negative things and towards the right things. So in that thing and in that quest, I realized many things. So I said to myself that during my time, if the Almighty helped me understanding things in a way, so why I don't want any youngster now to feel the same what I felt during my times. So I want to be that one person out there for everyone who needs help. Now, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है that when you are trying to help people, you get to say यार ये तफरी क्यों हो रहा है, यार इसका क्या मतलब है। क्योंकि आज के ज़माने में if you're being sweet or if you're being helpful, so the first thing that comes to the other person's mind, ज़रूर इसका कोई मकसद है, right? Because kindness is so rare आज के ज़माने में that people they always get suspicious कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। तो ये मेंटालिटी भी हमने चेंज करनी है, बिकॉज अगर हम देखें हमारे पेरेंट्स का टाइम और सारा टाइम, we were all very helpful to each other. We were always there to back up each other, to support each other, to build up each other.
एक अच्छे टीचर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अच्छे मेंटोर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके स्टूडेंट्स, उसके सर्कल के लोग उसके साथ कंफर्टेबल फील करें, इतना कंफर्टेबल फील करें कि उनके बीच में कोई बैरियर ना हो, कोई डर Hmm. खौफ ना हो। रिस्पेक्ट शुड ऑलवेज बी देयर। लेकिन जहां अगर एक स्टूडेंट सवाल करने से पहले डर रहा है या ये सोच रहा है कि मेरा टीचर मुझे जज करेगा, तो वो टीचर का फेलियर है, क्योंकि उसने वो बैरियर अपने स्टूडेंट के बीच में क्रिएट किया है। तो अंडरस्टैंडिंग योर स्टूडेंट, अंडरस्टैंडिंग द पर्सन हु वांट्स टू लर्न फ्रॉम यू बहुत जरूरी है। तो जितना आपके बीच में ट्रांसपेरेंसी होगी उतना लर्निंग कर्व इजी होगा। यू हैव टू मेक योर स्टूडेंट्स और द पीपल हु आर कमिंग अप टू यू टू लर्न इजी फॉर देम, कि वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल आपने बिल्ड करना है। देखिए, एवरीवन हैज दैट यूनिकनेस इन देम, ऑल दे नीड इज अ लिटिल पुश। और वो पुश करने का एक सर्टेन वे हो सकता है, जो बिल्कुल. टेक्निक्स आप पे यूज होती हैं दैट वर्क्स फॉर यू विल नॉट वर्क ऑन समवन एल्स, एंड द थिंग Hmm. दैट आई टेल यू, यू टेक इट वेरी पॉजिटिवली एंड यू वर्क ऑन इट। वही चीज मैं किसी और को बोलूं, हो सकता है वो ऑफेंड हो जाए, वो नेगेटिव हो जाए, और वो Hmm. हमेशा के लिए उस चीज के अगेंस्ट हो जाए, उस चीज से बिटर हो जाए। तो Umer, I अगर would, I would, I would take this point forward of yours जो आपने बोला कि बिल्कुल हम लोगों को एक ओपन विंडो रखनी चाहिए, एक लर्निंग कर्व हमारा थोड़ा ओपन ब्रॉड होना चाहिए. टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, मेंटोर्स का रोल होता है, हाउ देयर पुटिंग द कॉन्फिडेंस इन देयर पीपल एंड हाउ देयर मेकिंग देम गो फॉरवर्ड. एंड आई ऑलवेज बिलीव, मैं इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में इसलिए आई थी कि मेरी टीचर्स ने मुझे उससे प्यार करवा दिया था. तो आई टोटली एग्री टू योर पॉइंट एज वेल. So you tell me, how do I so some of the comments are here. Muhammad Ali is saying, and the people should relate to the stories. And then yeah, there's another comment that says the content should be positive and informative. The same comment that was for the phones. Some people are actually appreciating it, that it's very informative. So thank God. देखिए, And we have Miss Nadia Kaleem, who actually said that does it look like Umar to sit at the other side of the part now that you are the guest. I started off saying that I'm so proud that in a few weeks of time Sundar is hosting and I'm the guest. माशाल्लाह माशाल्लाह, ये इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैं हमेशा से मैं बताता चलूँ, ग्रेनिच के अंदर हमारा अपना रेडियो और टीवी है, एंड आई हैड दैट। सो आई हैव ट्रेन्ड हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स फॉर दैट, और मैं सबको बड़ा प्रमोट करता हूँ और कहता हूँ कि यार करो। मैं कहता हूँ हर चीज़ में इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, और जो कोई मुझे कहता है ना कि ये चीज मैं सर कर ही नहीं सकता, उससे मैं सबसे ज्यादा करवाता हूँ। और इसमें सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, हमारे बहुत से टीचर्स भी आते हैं। ठीक है, कि हमेशा पॉइंट इज दिस कि इम्पॉसिबल इज नथिंग, द ओनली थिंग दैट इज स्टॉपिंग यू इज योर ओन थॉट्स। सो वी हैव टू रिमूव दैट मेंटल ब्लॉक फ्रॉम आवरसेल्व्स। उससे हमारी पर्सनालिटी भी बहुत बेहतर होगी, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर होंगी, एंड वी एज अ पर्सन विल ग्रो अ लॉट। Once you have that clarity, the way you look at the world, the way you look at people, the way you maintain your relationships, everything is interconnected. So once you have that clarity and मैं कहूँगा ना, that calmness within yourself, you're at that level of consciousness, the way you look at the world completely changes. जैसे मैट्रिक्स मूवी में दिखाते हैं ना, उसको हर चीज डिजिटल नंबर्स में नजर आ रही है। बिलीव मी, you start looking at the world with a different level. आपकी The lens ऑब्जर्वेशन changes. आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बदल जाती हैं। आपकी जिंदगी में रिलेशनशिप बेहतर हो जाते हैं, लड़ाइयाँ खत्म हो जाती हैं। वाई? बिकॉज रादर देन रिप्लाइंग टू द पर्सन, यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द पर्सन, राइट? Hmm. अगर कोई इंसान गुस्सा कर रहा है या नाराज है या रिटेलिएट कर रहा है, तो रादर देन अंडरस्टैंडिंग कि वो गुस्सा क्यों है, वो रिटेलिएट क्यों कर रहा है, आप उससे और गुस्से में आते हैं और ज्यादा ऊपर से आते हैं। दैट ruins द थिंग। नाउ कितनी It's दफा true. मेरे साथ हुआ है कि इफ समवन इज रियली एंग्री एंड पुटिंग अप द होल लावा ऑन मी, मैं आगे से मुस्कुरा के उसको अगर जवाब देता हूँ या आगे से मजाक करता हूँ, तो विद इन 2 मिनट्स उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है, और उसके बाद वो बंदा जिंदगी में मेरे साथ गुस्सा नहीं करता। So there are ways to handle every situation. It's just that we need to understand everything better. यही चीज इम्प्लीमेंट होती है when you're on camera. कि फॉर Hmm. एग्जाम्पल देखते हैं शोज में लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा होती हैं, खासतौर पे हमारे पाकिस्तानी शोज में। इट्स जस्ट बिकॉज दैट पीपल, दे डू नॉट एग्री विद द अदर पर्सन।
जर्नलिज्म का, लाइव शोज का और किसी भी कॉन्वर्जेशन या डिस्कशन का पहला रूल है, वी एग्री टू डिसएग्री। आपका पॉइंट ऑफ Hmm. व्यू आपकी जगह ठीक है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मेरी जगह ठीक है। लेट्स जस्ट एक्सेप्ट दैट एंड लेट पीपल डिसाइड व्हाट दे थिंक इज राइट। अपनी ओपिनियन, अपनी सोच किसी और के ऊपर हावी ना करें। आप अपना ओपिनियन दे दें, आप लोगों का पर्सपेक्टिव दे दें, आप उसके अगेंस्ट फैक्ट्स लोगों के सामने पोर्ट्रे कर दें, एंड लेट पीपल डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। राइट? मेरे हिसाब से True. एवरी स्टोरी हैज फोर एंड्स। तो कहते हैं ना, हर कहानी के दो पहलू हैं। मेरे हिसाब से हर कहानी के चार पहलू हैं। कैन यू गेस व्हाट दोस फोर पहलूज आर? Um, एक तो एक तो हमारा वाला, और फिर एक like the person who is having the story, and I don't know. सही है। तो बेसिकली लोगों को सिर्फ ये दो पहलू पता है, एक आपका हाँ, एक मेरा। एक वो हाँ, तीसरा पहलू है जो सारे लोग देख रहे हैं और इनका इस बारे में क्या ओपिनियन है और वो इस कॉन्वर्जेशन को कैसे बताएंगे, ये तीसरा पहलू है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पहलू आता है चौथा। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, आई माइट बी रॉन्ग, एज आई सेड वी एग्री टू डिसएग्री, लेकिन ये मेरी मेरी विजन है, ये मेरा सोच है। चौथा ओपिनियन है द ट्रूथ। द ट्रूथ दैट ओनली गोज विद द ऑलमाइटी। बिकॉज जो मेरा ओपिनियन है वो बेस्ड ऑन माई नॉलेज एंड माई एक्सपोजर एंड माई एक्सपीरियंस है। जो आपका hmm, ओपिनियन है वो बेस्ड ऑन योर पर्सपेक्टिव, योर अंडरस्टैंडिंग, योर एक्सपीरियंस, योर एक्सपोजर है। Same goes for the audience and the third person. But truth, that is the reality, that goes only with the Almighty. हम सब तो अंदाजे लगा रहे हैं. We're just giving our perspectives. Now, does that's that so make true. sense? Oh my So, God, that changes the whole horizon that I was thinking on right now. That you know that मैं तो because obviously I said I have barely experience in it. I'll take in more comments, Umar, and you know some people are saying that you are right, Umar. Ghazal Anwar says you are right, Umar. Asking a question is a sign of intelligence. And Anila Welton again says that Umar, please share an interesting and hilarious story you encountered during your live shows. there are कुछ lots of हो them. जाए मजे की ना अच्छी सी. We take them to a lighter note as well. But first, I would like to answer Ghazal Anwar. ग़ज़ल अनवर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी, अब मैं रेडियो शोज करता हूँ, माय रेडियो शोज आई हैव एवरेज लिसनरशिप ऑफ 1 मिलियन पीपल। 10 लाख लोग जब मैं रात को हेलो एंड वेलकम बोलता हूँ तो मुझे सुन रहे हैं। उसमें ज़्यादातर लोग दे आर फ्रॉम रूरल एरियाज, दे डू नॉट हैव द प्रिविलेज टू गेट एजुकेशन, राइट? तो अब ड्यूरिंग entertaining them, I'm trying to educate them, not giving them a degree, but giving them the basic sense to ask a question. The day एक इंसान को सवाल पूछने की तमीज आ जाए, वो अपनी जिंदगी का कंट्रोल हासिल कर सकता है। The day a person realizes कि जो उसके साथ हो रहा है वो नाहक नाजायज हो रहा है और वो उस चीज के ऊपर आवाज उठाना सीख जाए बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के, that is the day you're changing a life. So, to prepare someone to ask a question, to give someone that basic sense to ask a question, to understand what is happening with them in their lives, I think that is the biggest strength you can give to any person. तो ये गजल अनवर का बड़ा अच्छा सवाल था जिसमें मैंने जवाब दिया. Now coming to the lighter notes. Now, रेडियो की दुनिया में पीपल दे लुक एट यू एंड दे फॉल इन लव. ये अब आप कनेक्ट यूं कर सकती हैं कि आप लिटरेचर स्टूडेंट हैं, आप एक किताब पढ़ती हैं और सिर्फ उस किताब के कैरेक्टर के बारे में पढ़ के आपको उससे इश्क हो जाता है. यू फॉल इन लव, यू हाँ, फॉल इन that's true, that's लव. true. अब रेडियो के ऊपर बहुत, अब तो चलें फेसबुक लाइव आ गया तो तस्वीरें और चीजें दिख जाती हैं, बट जो ओरिजिनल रेडियो शुरू हुआ वो सिर्फ आवाज होती थी. इंसान की पर्सनालिटी, अब जो शेर व शायरी के या प्यार मोहब्बत के प्रोग्राम्स करते थे तो उस आवाज से इश्क हो जाता था. तो रेडियो पे आवाज आती है बड़ी गर्जदार, बड़ी एक एटीट्यूड वाली, एक बहुत रात के प्रोग्राम में The लोग, tone has very much amplitude. That's so true. That's so true. रात के प्रोग्राम में बड़ी हस्की सी आवाज आती है, वी टॉक इन अ वेरी नाइस वे. सो ये चीजें होती हैं. कहने का मकसद ये है कि बगैर देखे उस आवाज से एक इमेज आपके जहन में बन जाती है, जैसे लिटरेचर पढ़ते हुए आप लोगों के जहन में कैरेक्टर की तस्वीर बन जाती है, राइट? True. तो इस तरह से लोग इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनकी आपकी आवाज सुने बगैर उनको नींद नहीं आती, आपसे बात किए बगैर, आपसे मशवरा किए बगैर उनका गुजारा नहीं होता. ये सब जगह होता है,
चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो सेलिब्रिटी क्रशेज हो, जो आप हीरोज को देखते हैं, लोगों के आप देखें एक्टर्स होते हैं, उनके बड़े बड़े पोस्टर्स कमरे में लगे हुए होते हैं। एंड आप देखते हैं सिंगर्स के लिए, चीज़ों के लिए आज की यूथ हमारी कितनी फैन फॉलोइंग होती है। सेम गोज विद रेडियो। तो एक मज़ेदार वाकया ये हुआ कि मेरा एक वर्क नंबर है, वो मेरे फैन पेज के ऊपर अवेलेबल है। तो मुझे कॉल आई एक दफ़ा एक लड़की की माँ की, मदर की। एंड शी सेज के उमर खान बात कर रहे हैं। मिल्ला जी कहते आप रेडियो वाले? मिल्ला जी कहते आपसे प्लीज एक रिक्वेस्ट है। मिल्ला जी कहते जी मेरी बेटी खाना नहीं खा रही है, आप प्लीज एक दफा उसको बोल दें खाना खा ले। एंड एज लाइक के मैम वो आपकी बेटी है, आप उसको स्पॉइल नहीं करें, 2 थप्पड़ लगाएं या जूते मारें और उसको सीधा करें। आप माँ हो के एक लड़के को फोन करके बोल रही हैं कि जी ऐसे कर लें, आप उसकी आदतें ना बिगाड़ें, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट आई डिड। और इस तरह के बहुत वाकयात हैं, मगर मैं और वाकयात बताऊंगा लोग बोलेंगे आई एम ब्रैगिंग अबाउट इट, लेकिन बिलीव मी बहुत से फैन मोमेंट्स हुए हैं, बहुत अजीब और गरीब फैन मोमेंट्स हुए हैं। बहुत से मेरे एक ज़माना था, मेरी गाड़ी के ऊपर मैंने पूरा जो है वो स्टिकरिंग कराई हुई थी रेडियो की, मेरी तस्वीर बनी हुई थी, मेरे शो की मार्केटिंग हुई थी। तो मेरे घर के बाहर गाड़ी खड़ी रहती थी, तो बहुत से लोगों को पता चल गया कि ये मेरा घर है, यहाँ मैं रहता हूँ। तो बहुत सी फीमेल फैंस घर अक्सर आ जाती थी। तो बड़े अजीब ओह नाइस भाई, वाह भाई। वाकयात हुए। उनमें एक दफा फिर ये हुआ कि एक लड़की आई एंड वो बड़ा मतलब अजीब व गरीब वाकयात हैं ये, मतलब शेयर करते हुए मुझे हंसी आ रही है कि लोग पता नहीं क्या सोचेंगे मैं बड़ा चढ़ा के बातें कर रहा हूँ। So I was sleeping and suddenly I get a knock and this my guard was there and चौकीदार and he was पठान in his own लेजा। He said उमर भाई बाहर एक लड़की खड़ा है। मैंने बोला यार मतलब एक बंदा जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर करता है, तो कोई गिफ्ट ऑर्डर करता है, कोई घड़ी ऑर्डर करता है, कोई और चीज ऑर्डर करता है, ये लड़की कहाँ से आ गई? तो ही वाज लाइक उमर भाई, मैंने यार मैंने तो किसी को नहीं बुलाया। कहता नहीं वो तो खड़ा है, बाहर खड़ा है। मैंने बोला अच्छा। अब मैं खोया हर कर। मतलब, मैं उठा, मैं मुंह वूह धो के बाहर निकला एंड देयर वाज दिस अननोन पर्सन स्टैंडिंग देयर एंड शी लुक्स एट मी एंड शी स्टार्ट्स क्राइंग एंड आई वाज लाइक बहन मैंने क्या किया है, क्यों रो रही हो, क्या हो गया? अब मैं परेशान, छोटी लड़की थी, बहुत छोटी थी। तो आई वाज लाइक यार ये रो क्यों रही है, मुझे परेशानी हो गई, मतलब ये घूम गई है, क्या हो गया? Later on, I realized she was a fan and she was passing by. She saw that car. She realized मेरा घर है, वो रुक गई। So I took the number for उसकी अम्मी का, मैंने उनको फ़ोन किया, उनको बुलाया, उसको हैंड ओवर किया एंड फिर आगे से उन्होंने बड़ी रिस्पेक्टफुली चीज़ की कि यार ये बड़ा अच्छा कि ये एक पोर्ट्रे है कि आपको अगर कोई फॉलो कर रहा है या कोई आप पीपल लुक अप टू यू, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि आप अगर एक पब्लिक फिगर हैं या पीपल फॉलो यू, यू हैव टू डू थिंग्स जो एक्चुअली लोगों की रिस्पेक्ट ज्यादा बढ़े आपके लिए, यू दैट्स नो। सो ट्रू। फिर उमर, आप बिल्कुल आपका मैं यही वाला बात पॉइंट ऑफ व्यू, अभी मुझे ना रिसेंटली एक कमेंट भी आया जिसमें आयशा अब्दुल रजाक बोल रही थी अलाउ द गेस्ट टू टॉक। मैंने बोला मैं तो इतना अलाउ कर रही हूँ मेरे को, ओके फाइन आई एम गोना अलाउ यू मोर टू टॉक। आयशा अब्दुल रजाक asked us another question. She's like, what was the one thing that a teacher or lecturer said that changed your outlook? One incident that that just changed your outlook. यार मैं बचपन से ना बड़ा पॉजिटिव था और बड़ा जिद्दी था। मेरे बहुत से टीचर्स, मैं ग्रेनिच का ग्रेजुएट हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी में बहुत से मेरे टीचर्स ने पढ़ाया। तो by the time I got there, I was, very rebellious in a positive way कि जो चीज़ मुझे समझ में आती थी वो मुझे नहीं समझ आती थी, वो मैंने नहीं करनी। लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ ये एक था, एक्सप्लोर करना है, मेहनत करनी है। तो मेरे इस पूरे पाथ में देयर वर लॉट्स ऑफ टीचर्स जिनकी बहुत सी पॉजिटिव बातें मैंने अपनी ज़िंदगी में इंक्लूड किए हैं, जिनमें सर अली सईद की बहुत सी बातें हैं, सर जावेद मुस्लिम, ऑल्दो ही यूज्ड टू टीच अकाउंट्स एंड आई यूज्ड टू हेट अकाउंट्स, लेकिन उनकी बहुत सी बातें मैंने अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट की। आई रिस्पेक्ट हिम डीपली। फिर यूनिवर्सिटी से मैम तायरा खान, मैम रिजवाना अमीन एंड ऑल द टीचर्स, किसी भी टीचर, हर क्लास से, यहाँ तक कि आप टीचर्स की बात कर रहे हैं, मैं अपने स्टूडेंट से सीखता हूँ। Everything talks to you. Believe me, when I am going for my program or a radio show, when I'm traveling, even the signboards, even the trees, even the roads, even the birds, every non-living and living things communicate with you. If you have that observation skill, हर चीज आपको कोई ना कोई चीज सिखा रही होती है। ये आपका नजरिया है, ये आपका नजरिया है कि आप उस चीज को कैसे परसीव कर रहे हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रेडियो पे हूँ और मैं इस वक्त पूरी ऑडियंस से बात करता हूँ कि आप लोगों से मैं कहता हूँ कि आप अपनी आंखें बंद कर लें और मैं आपको एक समुंदर का सीन विजुअलाइज करवाऊँ, तो आपकी इमेजिनेशन से आप उस समुंदर में पहुंच जाएंगे. यू विल इवन स्मेल that scent of the wet sand. You will hear the sound of the seashore. This is the power of your imagination. So, when you have the power of getting into the imagination of your audience, especially when you're doing programs through radio, so you can do anything. Now, you can change minds, you can influence people, you can bring them towards the positivity. So, why not make use of it? That's so true. I would take that point forward and sum it up that this was an amazing session. Umar, thank you so much for giving us the whole idea of how we can actually, better ourselves in terms of the techniques and the, tips that you have given us. They really helped us, especially me. Look at me. I am here because, you have helped me. So thank you. We really appreciate it. Umar, one last note that you would say, and we'd wrap it off that how do we change the new generation that's now going in forward in the live sessions in the media industry? And I would love to know more about your program, that one that you're going to mentor in Greenwich University. What are you doing there? Are you mentoring anything? Yes, I will be teaching radio and voiceover in the summer program, so you can still sign up for it. और जो ग्रेनेड के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सेमेस्टर लिया हुआ है या जो अलमनाइज हैं वो कोर्स 50% डिस्काउंट पे अवेल कर सकते हैं. नीचे वेबसाइट मेंशन है, और हमारी ये व्हाट्सएप की कांटेक्ट और हमारी ईमेल डिटेल्स हैं. So anybody who wants to sign up the course, the classes are starting from Tuesday. It will be 2 days a week, that is Tuesday and Thursday from 3 to 5. 8 classes होंगी, 2 hours each. End of that class आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन सर्टिफिकेट से ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन, आपकी ऑब्जर्वेशन, आपका बात करने का तरीका सब बदल जाएगा. तो अगर कोई इंटरेस्टेड है इस कोर्स में तो मोस्ट वेलकम. इसमें कोई क्योंकि यू आल्सो हैव बीन माय स्टूडेंट इन अ वेरी इनफॉर्मल वे, मैं एक बड़े लाइटर नोट पे बहुत ही हंसते खेलते नॉर्मल कॉन्वर्सेशन के बीच में लोगों को ट्रेन करता हूँ. और इट्स नॉट दैट आई एम टीचर एंड अदर स्टूडेंट, वी आर ऑल सेम. मैं आपसे सीखता हूँ, आप मुझसे सीखें, हम दोनों एक दूसरे से सीखें. मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली ज्यादा है तो मैं वो शेयर करता हूँ. एंड दैट इज हाउ वी लर्न फ्रॉम ईच अदर, वी बिल्ड अप ईच अदर स्किल्स. और इन द एंड बहुत सी चीजें इंसान को मिलती हैं. सो कुछ एक और कमेंट ऑन स्क्रीन है, if you can read it out. Yes, Ikras Mughal says, yeah, Umar, you're right. Calmness should be a part of a person's life, and we should have the courage to understand other person's opinion. Do tell us what topic should be discussed on live sessions. Any suggestions? देखिए Ikra Asif is actually a Greenwich University student as well. She's doing her master's in English literature. Great. Thank you for the question. First, देखिए live sessions मैं अपना vision share कर सकता हूँ. The reason we started live sessions at Greenwich platform was I was fed up of the negativity that we see on the mainstream media. So what we need to do is, because of the whole social distancing, we need to create a platform where everyone can come up together, have a good time, meet and greet each other in an informal way, learn something new, be productive, be positive. और जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, जिनका 20, 30, 40 साल का एक्सपीरियंस है, हम उनके एक्सपीरियंस और एक्सपोजर से आधे घंटे 1 घंटे के सेशन में पॉजिटिव पॉइंट्स नोट करें, उसको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करें ताकि हमारी जिंदगी बेहतर हो सके. नाउ इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई हैव पिक्ड अप लॉट्स ऑफ पॉजिटिव थिंग्स फ्रॉम लॉट्स ऑफ पीपल. सो हुआ क्या, हर सक्सेसफुल पर्सन की एक सक्सेसफुल आदत मैंने अडॉप्ट की, उसको अपने पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की. दैट इम्प्रूव मी. और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये कि जितने फेलियर्स हैं वो आपको सबसे ज्यादा सिखाते हैं, बिकॉज दैट इज समथिंग यू गेट टू नो कि यार ये चीजें जो मैंने नहीं करनी है, ये चीजें जिससे मुझे नहीं इस तरफ जाना है. तो सबसे ज्यादा लर्निंग कर्व फेलियर में है. आप भी अगर फेल होते हैं तो फेलियर is, you should never get disheartened with failure, because failure teaches you and makes you even stronger. तो अपने दिमाग को सब लोग whoever is listening ये चीज समझा ले
सिखा दें कि you never fail, you're yet to succeed, and failure Oh, always make you stronger. So you have to have that positive approach in life. कि एक मूवी का एक डायलॉग है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, मैं आपसे इसका मतलब पूछूंगा एंड देन आई गिव माय पर्सपेक्टिव ऑन इट. Try and try again until lambs become lions. ooh, that's so true. That's so true. See, we've in literature we have learned metamorphosis, and there are three stages of metamorphosis. So I would take that into in that perspective. और उसमें ये था कि the first stage is the camel, the second stage is the lion, and the third stage is the child. And the second stage, the lion stage, the one that you talk about, is the stage that when you realize that this whole burden that you have around you for the people and their perspective and the boundaries and the responsibilities that are holding on to you, they don't really matter. You as an individual matter, and you are the person who's going to grow. So my perspective is that. What about yours? So I ask until lamb become lions. Try and try again until lamb become lions. So in the practical world, do you think lamb can become lions? I would say yes, Umar. I would say yes. If you try to become, look, I would take my example. I was a person who was scared of even going out of the home. There was a time in my life when I was completely there. Then afterwards, as I grew up, I faced when the hardship came. When the hardship came to me, and it made me realize that I can be someone else. I can do something in my life. It changed me. I was the lamb. I turned into a lion. I believe I did. Alhamdulillah. On a fictional level, yes. On skill level, yes. But practically, can a lamb become a lion? Practically lamb lion. I don't know if you're thinking about the facial Lamb, features or. real animal, lamb, can it Uh, become a lion? I don't know. You give me your perspective on it now. ठीक है, now you're confused. लैम्ब लायन कब नहीं बन सकता? एक बकरी बकरी है, एक शेर है. It is Oh, impossible. individuality. Okay. It is impossible. ये मेरा पर्सपेक्टिव है. आपका पर्सपेक्टिव भी ठीक था. It was right. बट मेरा यहाँ पर्सपेक्टिव क्या है इस बात पे? How I perceive this word as. एक बकरी बकरी है, एक शेर है. ठीक है, बकरी शेर कभी नहीं बन सकता. ये इम्पॉसिबल है. ये मैं बात जानता हूँ. फिर भी आई विल नॉट गिव अप. Hmm. So Yes. try again until lamb becomes lions. Even when you know it's impossible, never give up. That's That's so my. true. That's so true. I would take Omar's last comment that try and try until a lamb becomes a lion forward, and we would end this discussion. Thank you so much, everyone. Thank you so much, Omar. I really appreciate for coming and giving us your time, giving us the mentorship we needed, and always being there for your students. We really, really appreciate you as a mentor, and we've always looked up to you. Thank you. And मैं जाने से पहले ये पूरे जितने लोग हैं, I am very approachable for all the Greenwich students. Whoever is interested in learning, whoever is interested in getting onto Greenwich Radio, onto Greenwich Web TV, on being part of this social media platforms. As Sundus approached me, it just took her 2 days to be on screen. राइट. सो True. यू कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दिस. आप ग्रेनिच के पेज पे मैसेज कर सकते हैं. आप मुझे सर्च कर सकते हैं फेसबुक पे. RJUMERKHN, उमर खान स्क्रीन पे लिखा, उसके आगे RJ लगा देंगे तो मैं इजीली फेसबुक पे मिल जाऊंगा. तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं. आप ग्रेनिच को ऑफिशियली फोन करके बता सकते हैं आपका इंटरेस्ट है साइड में आने में. एंड वंस अगेन आई रिपीट, I'll be instructing the radio and voiceover short course in the summer program where you can sign up through our website or our WhatsApp number. You can see or our emails. Tuesday, Thursday को classes हैं, and for students of Greenwich and alumni, it is 50% discount. तो इतनी अच्छी opportunity में you'll get a certificate and you'll learn a lot. Believe me. इस session में अगर आपको मजा आया, you should be a part of that class. That would be much more fun. Yeah, thank you so much, Amar. I really appreciate it. And once again, I would thank you all the people who came and who gave us their value input. Really appreciate your time and your effort that you guys are giving us and supporting us. Your support is the reason how me and Umar are always ready and welcoming and just going forward. We would look into the suggestions, we will look into the feedback as well. And if anybody wants to approach Umar, as he said, he's very approachable, 100% true. Thank you so much for your time. And until
you guys don't become the lambs or the lions. Keep on looking into our shows and keep on learning. Thank you so much. Have a good day. Love.